जी अस्सलाम वालेकुम। होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग वेल एंड ये एक काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोगों ने की कि इनिशियल लेक्चर्स का एक तरीके से समराइज फॉर्म जो है वो बना दी जाए। सो फॉर दैट मैटर आई थॉट दैट आई शुड मेक दिस वीडियो विच वुड help you recall a few lectures that we had initially. So let's see what is it that today we are to do. uh, पहले तो सबसे पहले तो ये कि कुछ फाइल्स हैं जो आपने देखनी है, और ये वही फाइल्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी हैं। एंड आई वुड like you people to have a look at those files. So we're going to discuss what those files are about, और क्या मामलात हैं उन फाइल्स के वो हम जरूर देखेंगे। But this is how your Microsoft BI desktop looks like. The first thing that you need to do while you've opened the file is probably save it. अच्छी बात तो ये होगी कि जहाँ आप लोगों की बाकी फाइल्स हैं वहीं पे सेव कर लें। मैंने रॉ अपने डेस्कटॉप के ऊपर आई मेड अ फोल्डर रॉ फाइल्स, and if I can show you this folder later on जहाँ मेरी CSVs पड़ी हैं. So I'm just going to uh, save my working file here. Let's just call it a working file. I'm going to save it. So there you are. सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि कैसे ये BI का इंटरफेस किस किस्म का है. दिस इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर. ऊपर आपके पास जो है एक क्विक एक्सेस बार है ये. ठीक है, इसके अंदर आप टाइटल भी देख रहे हो. इसके अलावा सेव का बटन है, अनडू के बटन है यहाँ पे. दिस इज व्हाट यू हैव एज ए QAB. अदर देन दैट यू गॉट अ रिबन. ये चीज रिबन है, और टैब्स हैं कुछ. जैसे जैसे मैं टैब्स नेविगेट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शंस खुल रही हैं. एंड another thing that you must remember is that there will be times when additional tabs will appear on the ribbon. वो भी हम देख लेंगे एक आध एग्जांपल कुछ देर के बाद कि वो कब होता है. अदर देन दैट फाइल के ऑप्शंस है जिसमें फाइल से रिलेटेड सारी ऑप्शंस आपके पास टूल जो है गिवन है. दिस आर ऑल फाइल रिलेटेड थिंग्स, right from creating a new one, opening a report, saving, getting data, which by the way is also here at the front, importing, exporting, and of course the options and setting. uh, and this is something that I would like to start with. सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, जब भी BI में काम करने, वो ये है कि अपने ऑप्शंस वाली सेटिंग में जाकर कुछ चीजें ठीक करनी है. रिमेंबर दैट समथिंग दैट वुड really matter to you is how what kind of files that you're importing. So there are a couple of things that you would probably like to look into immediately, or वो है regional settings. Now regional settings options are available in the main optional tab as well as in the current file tab. So you better be careful, because sometimes what happens is कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था शुरू में. तो मेरा ख्याल था कि सिर्फ एक जगह पे है, दरअसल ग्लोबल सेटिंग भी इसकी मौजूद है. और आपने देखा यहाँ पे मैंने इंग्लिश एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश का फॉर्मेट किया है. इसी तरीके से जो फाइल की सेटिंग्स है उसके अंदर भी यू गॉट रीजनल सेटिंग ऑप्शंस which can be changed into English and United States. So this is something you need to do according to the data set you have. So the data set I have is that of United States. और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करना क्यों जरूरी है. सिर्फ एक फील्ड है ऐसी, डेट और टाइम की, जिसकी वजह से करना जरूरी है. बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स
में जो फॉर्मेट यूज होता है तारीख लिखने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मुख्तलिफ ज़ाहिर है मुल्कों में मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं। सो इन यूनाइटेड स्टेट्स व्हाट दे डू इज दैट दे राइट द मंथ फर्स्ट, then the date, and then the year, which is something which is not conventional in our part of the world and in UK as well. यूके में, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ कॉलोनियल पास्ट है वहां पे, जैसे यूके में पहले तारीख लिखी जाती है फिर मंथ लिखा जाता है, ये फॉर्मेट फॉलो होता है। अब जाहिर है बीआई कंफ्यूज हो जाएगा डेट वाले सेक्शन में अगर आपने दुरुस्त निशानदेही नहीं की तारीख की। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। देयर आर अदर सेटिंग्स दैट मे बी वी शुड लुक इनटू एज वेल। फॉर इंस्टेंस हम ये चाहेंगे कि जब हम अपनी विजुअल्स के ऊपर आए तो हमारे विजुअल्स जो है ना क्लियरली नजर आए। सो ये कस्टम विजुअल्स के अंदर ऑन कर लें दोनों ऑप्शंस, ताकि बाद में परेशानी ना हो, अगर खास तौर पे अगर इसी फाइल को यूज कर रहे हैं। सो इफ यू रियली गेट बग्ड बाय अपडेट्स, जो अपडेट्स के मैसेज आती हैं तो इसको टिक ऑफ कर लें, डिस्प्ले अपडेट नोटिफिकेशन। एंड आई वुड नॉट लाइक माइक्रोसॉफ्ट टू बी सेंडिंग मी emails, therefore इसको भी मैंने टिक ऑफ कर दिए। and the rest looks mostly okay except that डेटा लोडिंग, करंट फाइल का जो डेटा लोडिंग है इसमें आपने कुछ डिसीजंस लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट रिलेशनशिप्स फ्रॉम डेटा सोर्स और फर्स्ट लोड, मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ बिकॉज आई वुड लाइक टू डू दैट माई सेल्फ। इसी तरह ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप्स मैं ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहूंगा कि रिलेशनशिप्स जो है मैं खुद बनाऊं। अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो होगा क्या कि ये खुद कोशिश करेगा रिलेटेड फील्ड्स के अंदर बनाने की, एंड उसमें कुछ गलती के चूंकि इम्कानात होते हैं, इस वजह से इट्स अ बेटर आइडिया टू टर्न इट ऑफ। आई थिंक द रेस्ट लुक्स ओके, नॉट टू बैड, सो आई एम गोइंग टू से ओके। और लेट्स जस्ट स्टार्ट हैविंग सम फन, और कुछ इंपोर्ट करते हैं हम, फाइल्स लेकर आते हैं बीआई में, देखते हैं कि कैसी दिखती हैं, उनको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद कुछ उसकी सेंस बनाते हैं। उसके बाद ये तीन मोड जो हैं ये हम, इनफैक्ट इट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर हम अभी देख लें। सो अगर आप देखें ये एरिया जो है पेन्स का है, यानी अगर व्यू पे मैं चला जाऊं तो ये देखें ये यहाँ पे इस रिबन में कुछ ऑप्शंस हैं जिन पे मैं क्लिक करता जाऊंगा तो मेरे पेन्स खुलते जाएंगे। ऑफ कोर्स डिफरेंट मकासद के लिए पेन्स यूज होते हैं। फिल्टर्स विल कम टू दैट, वी हैव एक्चुअली, अगर आप मुझे फॉलो करें क्लास में तो यू नो व्हाट दीज फिल्टर्स आर ऑल अबाउट। इस तरह सिलेक्शन है, इसी तरह सिंक स्लाइडर्स हैं, ये भी हम कर चुके हैं। इसी तरह बुक मार्क्स हैं, ये आई गेस पेंडिंग है या शायद मैं करवा चुका हूँ, आई एम नॉट रियली श्योर। इसी तरह परफॉर्मेंस एनालाइजर है, ये अभी हमने नहीं एक्सप्लोर किया। इसी तरह विजुअलाइजेशन है, इसको आप कोलैप्स भी कर सकते हो इफ यू वांट अ ब्रॉडर व्यू ऑफ थिंग्स। सो इफ समथिंग इज टर्न्ड ऑफ, डोंट वरी, इट्स नथिंग इज परमानेंटली टर्न्ड ऑफ। आप उसको यहाँ से ऑन कर सकते हो इन एडिशनल पेन्स को। जो पेन्स बेसिकली जरूरी हैं तीन, उनको आप कोलैप्स कर सकते हो इस तरह। So of course we can have a look at these three essential ones. फील्ड्स के अंदर जो भी आप क्वेरी लेकर आओगे, याद रखिएगा कि क्वेरी और टेबल synonymously मैं यूज करूंगा, so please do not get confused. So whatever data that we are importing, वो डेटा के यहाँ पर टेबल्स उसके लिस्ट हो जाएंगे। इस तरह विजुअलाइजेशन है जिसमें रिपोर्ट में डलने वाली बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। ज्यादातर विजुअलाइजेशंस में चार्ट्स हैं, स्लाइसर्स हैं, इस तरह की चीजें मौजूद हैं। इसमें से काफी कुछ हमने किया। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे चले जाएं, लाइक टू मे बी जूम इट अ लिटिल बिट, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज और ये ऑप्शन जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन है ये है। ये वैल्यूज जब हमको यहाँ पर लेकर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है। इसी तरह ड्रिल थ्रू के ऑप्शन हैं, वी कवर्ड दैट इन द क्लास। ये भी थोड़ा सा मैं जिक्र आइंदा कभी इसका जरूर करूंगा।
इसी तरह फिल्टर्स हैं जो कि विजुअलाइजेशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, एंड विल डिस्कस दोस लेटर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो यहाँ पे 3 मोड्स आपके पास मौजूद है। देयर आर 3 मोड्स दैट बी आई प्लीज विथ, and if you really, I have the convenience of zooming it in and hovering my mouse over them, तो अगर मैं सिर्फ माउस ओवर करूँ तो you see the first one is the report one, the second is the data one, या डाटा, आजकल डाटा कहते हैं, Americans pronounce it डाटा, and the third is the modeling one. So as we change, and of course we mostly, since we were concerned with report making, तो हमने इस पे ही ज्यादा काम किया है। अगर मैं डाटा या डेटा बोर्ड पे चला जाऊं तो ये इस तरह दिखता है। इस वक्त कोई हमारे पास टेबल है नहीं, इस वजह से ये थोड़ा सा सोना सोना सा है। सो डोंट वरी, विल ब्रिंग इन द डेटा एंड विल लुक एज हाउ इट पॉपुलेट्स। इसी तरह मॉडलिंग व्यू है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह मैं इसको तब्दील कर रहा हूँ, मेरे ये ऑप्शंस भी जो है ना तब्दील हो रही है। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। लास्टली स्टेटस बार इसका नीचे है, जिसमें मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ लेआउट से मुतल्लिका ऑप्शन है, इसी तरीके से जूम इन या आउट आप करना चाहे तो वो ऑप्शन है, और फाइनली नई अगर आप कोई शीट्स बनाना चाहते हैं स्पेसिफिकली इस मोड में, रिपोर्ट के अंदर, तो आप वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो जाहिर है ये यहाँ पर भी मौजूद है, और इसकी एक वजह है। इतनी कोई खास वजह नहीं है, बिकॉज व्हाट वी कैन डू इज क्रिएट डिफरेंट स्कीमास हियर। वी हैव नॉट डिस्कस दैट, बट दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, हमारी जरा कोर्स के स्कोप से इस वक्त बाहर है, बट आई माइट डिस्कस इट्स एट सम पॉइंट इन टाइम। सो आई होप दैट यू गेट योर सेल्फ कंफर्टेबल। अगर आपने ये पहले नहीं किया हुआ, प्लीज चीजों को देख लें, फील कंफर्टेबल, क्लिक्स वगैरह करके देख लें, इधर उधर जाकर देख लें, इसको एक्सप्लोर करके देख लें। वॉन्ट यू टू बी एब्सोल्युटली comfortable with Microsoft BI. So let's now start bringing in some data. एक तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास जो डेटा मौजूद है वो एक दफा देख लें, थोड़ा सा डिस्कस कर लें। उसमें भी एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं विच आर वर्थ डिस्कसिंग। लेट मी जस्ट try to share my screen and show you the raw files के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, and these are the files that I have, and of course ये जो फाइल अभी मैंने खोली हुई है उसको मैंने सेव किया है। PBIX एक्सटेंशन है पावर BI की फाइल्स की। सो P for power, BI for business intelligence, and X is the format. So there you go, PBIX. And what I have here is some data, and this data, largely speaking, are CSVs, प्रोडक्ट हायरार्की की एक फाइल है, सेल्स 2017 की एक फाइल है, 18 की है, 19 की है, और स्टोर सिटीज की फाइल है। ये ज्यादातर फाइल जो है CSVs हैं। स्टोर सिटीज की से रिलेटेड एक और फाइल एक्सेल की है, उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मे बी इन अनदर वीडियो। सो CSVs are comma separated files which comma separated values files which are sort of like your raw files. For instance, अगर मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ ना, so it's kind of this. uh, the great thing about these kind of simple files is कि इसमें formatting नहीं होती, and they're very light. So we use them because they can practically hold a lot of data, sometimes even millions of rows, and still, since इसमें formatting नहीं होती, इस वजह से आसानी के साथ आप उसको ना अ, इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स वेरी लाइट ऑन योर सिस्टम। सो ये बात इसी वजह से हम CSV जो है ना यूज करते हैं। सो ये
CSV से आपको दिखाना मखसूस था। खोल इसको रहा है आपका एक्सेल। एक्सेल की एक्सटेंशन इसको खोल रही है, बट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज it's not an Excel workbook. It's a CSV. It's a different format, and we need to bring it in our BI file. Let's try doing that. I'm going to share my screen again, and we'll go to our Microsoft BI file if we could find it. I hope I've not closed it. It's not closed. I cannot. ये नहीं है. Just stop, and there you go. So we're back to our Microsoft BI, and let's just try getting some data. So ये आप देख रहे हैं गेट डेटा का बटन। अगर आप इस पे क्लिक करें डाउनवर्ड एरो को तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, विच मीन्स दैट these are all separate platforms जिससे आप डेटा उठा सकते हैं। Right now we are only concerned about text CSV files because that's what we have. So I'm going to click here, and it's going to take me to a browser, not necessarily at the right place, मगर किसी भी जगह पे लेकर जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइल्स कहाँ हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे पता है कि मेरी फाइल्स यहाँ पर हैं रॉ फाइल्स के नाम से, तो मैं यहाँ पर चला गया हूँ, and now I can really start importing my file. The first file that I would like to import is my product hierarchy file. So I'm going to import it, press enter, and what it's going to do is show me a box. और इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर उसने एक सैंपल आपको दे दिया है जिसमें 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल की। और उसने फर्स्ट 200 रोज का एक छोटा सा डेटा दिखाया आपको, एंड दिस इज व्हाट योर डेटा वुड लुक लाइक। दिस ये आपको बता रहा है कि जब आप इसको इंपोर्ट करोगे तो दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक। लेट्स जस्ट प्रेस लोड एंड सी व्हाट हैपेंस देयर। सो ये अब आप देख रहे हैं कि इट्स लोडिंग, एंड देयर यू गो, इट्स देयर नाउ। और अगर आप गौर करें तो बिल्कुल इस साइड पे फील्ड पे आपका प्रोडक्ट हायरार्की की फाइल जो है आ चुकी है। एंड इफ आई क्लिक इट हेयर तो यहाँ पे कॉलम्स भी दिखा रहा है, ऑब्वियसली नॉट द राइट कॉलम्स बिकॉज आई नीड टू रियली एडिट देम, बट आई वुड लाइक टू bring in more files here, maybe all the files. I'm again going to click on my get data and press the same option again, 2017 raw को भी लिया तो मैं। This is what it looks like. That is fine. I'm going to load it. Get data again. And 2018. Get data again. 2019. And I'm going to load it. Get data again. And finally, the store cities file. And there you go. I'm going to load that as well. So अब जितना डेटा, जितनी CSVs मेरे पास ही वो मेरे पास यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं ये सेव का बटन यहाँ प्रेस करूंगा ताकि मेरी फाइल सेव हो जाए। यानी ये जो एक तरीके से डेटा मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो सेव हो जाए। सो नाउ दैट इफ आई गो टू माय डेटा मोड, you'll see that मुझे यहाँ पे डेटा नजर आना शुरू हो गया है। जिस भी फाइल पे या टेबल पे, क्वेरीज भी इसको कहते हैं, जिस भी क्वेरी पे मैं जाऊंगा वो उसका हिसाब से मुझे यहाँ पे डेटा नजर आना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो दिस नीड्स क्लीनिंग, सो our next topic is going to be cleaning the data. So I'm going to stop my video here,
और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डाटा आपको क्लीन करके दिखाऊंगा।